Hello guys, welcome back to our channel The Study Tech. So today we're all going to discuss about the things that relationship between India and China. Okay, so those who are watching my video, please I request you guys to do like, share and subscribe my video and share as much as it possible. Okay, so let's start our video. Before starting our video, let's have some news which is related to India and China, that India and China lash out at each other at talk reach bitter deadlock. Okay, as you all know that 13th round of talk is being held between India and China. Okay, so before 13th round of talk there had 12th round of talk had happened. ठीक है, 12 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं एंड उसके बीच में between both the countries they have remain the matter of concern is what is the main matter of concern, that is boundary dispute is the main matter of concern between India and China. Okay, so what is the statement of New Delhi? The statement has been given by the New Delhi that the 13th round of top level military talks between India and China ended a bitter stalemate on Sunday. टॉक तो हुई लेकिन इट्स एंडेड इन बिटर सेलमेट ऑन संडे में टॉक हुई थी और ठीक है वो थोड़ी सी बातचीत में बस वो टॉक खत्म हो गई एंड चाइना इज मतलब बीजिंग इज नॉट वांटिंग टू टॉक टू बिजी डजंट वांट टू टॉक टू इंडिया. ओके, एंड they fails to provide any forward looking proposal, मतलब कि they have still not provided that when they will going to meet or when they will going to meet on or when they will going to talk related to such type of topics. Okay, and diffuse the 17-month military confrontation in eastern Ladakh, and they just totally deny the 17th month of military confrontations which are going on in eastern Ladakh. And China Western Threatened Commands, okay, they have totally denied that कि 17 मंथ से अभी मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन भी चल रही है इन ईस्टर्न लद्दाख. ओके, दिस हार्डनिंग ऑफ स्टैंड्स बाय द टू कंट्री इफेक्ट्स मीन्स मतलब कि टोटल ऑल अबाउट इफ यू विल सी द डाटा ऑफ द स्टैंड ऑफ ट्रूप्स in the eastern Ladakh, it is all about approximately 50,000. Okay, 50,000 troops are being deployed over there in eastern Ladakh, and the monsoon is also मतलब कि which is very opposite of that troops. Okay, because monsoon the temperature of the eastern Ladakh goes to -30. Okay, the temperature goes to and it dipped to -30 degrees Celsius with acute oxygen deprivation. Okay, so the condition are also not good over there, so that's why the India wants to take a trek break. Okay, so now let's see some relations between India and China. Just have a look on it. India and China is also known as, also called as Sino-Indian relations, Indo-Chinese relations, which refers to bilateral relations between India and China. Bilateral, why do we call bilateral? Bilateral is because the relations, bilateral means the two. Okay, bi matlab two. The bilateral relation matlab ki bilateral relationship of two countries, that known as bilateral relations. Okay, and China and India had historically peaceful relations for thousands of years of recorded history. Okay, and as per the statement, okay, the statement is telling that in our history, the recorded history, India and China had a peaceful relationship. Okay, yes, we know that before the modern era when it started, okay, before that India and China had peaceful relations between them. Okay, and after that but the tone of this relationship has varied in modern time में क्या हुआ, the relationship was totally changed. Okay, and especially after the rule of communist party in China. ठीक है, जो communist party are ruling in China, after that the relationship was totally changed and it was against India. Okay, and the two nations have sought economic cooperations with each other. ठीक है, they have sorted out the economic cooperations with each other, while frequently border dispute and economic nationalization in both the countries are major point of contention. Okay, boundary dispute is the bone of contention of between India and China. Okay,
So boundary disputes are regularly is being news, okay, between the, and why this is news, because always China always try to capture the boundaries of India, Nepal, or India, some parts of India, from the side of Ladakh region, ठीक है, and Sikkim, Nathula, you have heard about it, that Nathula is a post which has been captured by that Chinese troops, okay, and Arunachal Pradesh, AP, ठीक है, these three states, okay, these two states and one union territory is always in news because China is always try to annex it, okay, always इसको क्या करता है, annex करने की कोशिश करता है, okay, because अभी आप before 2-3 days you have heard that Chinese soldiers has been stopped there in Arunachal Pradesh, okay, approximately 120 soldiers have been stopped there, okay, 120 से भी ज़्यादा soldiers वहाँ पर देखे गए थे and उनको रोका गया, ठीक है, so it's a major bone of contention for it, okay, and the modern relationship begins in 1950. This modern relationship that okay, when we are talking about the modern relationship, after that the tone of the relationship has changed, okay, and this modern relationship begins in 1950. 1950 में ये modern relationship begins होता है when the India was among the first countries to end formal ties with Republic of China, Taiwan, and recognize People Republic of China as a legitimate government of main China island, ठीक है, this modern relationship has begun in 1950 when the India was amongst the first country of the world to end the formal ties with Republic of China. उस time Republic of China Taiwan थी, ठीक है, and recognize the people republics of China, okay. So in 1950 India and China has also established a diplomatic relations, ठीक है, they have also established diplomatic relations. India and China are the two major regional powers in Asia and two most populous country and amongst the faster growing major economic in the world. Okay, as you all know that one of who is having the most पॉपुलेशन, ठीक है, किसके पास मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में, दैट इज चाइना, ठीक है, चाइना के बाद कौन है, इंडिया, ठीक है, चाइना और इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया आर द टू कंट्री विच इज हैविंग द major regional powers in Asian countries, okay, and they are the two most populous countries, it means in terms of population, okay, in terms of, and also in terms of economy, they have had almost of about 18.51% of टोटल जीडीपी, ठीक है, ओके, उनके आसपास लगभग 18.5% के आसपास उनकी टोटल जीडीपी है, ठीक है, तो इट्स द लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, and world growth in diplomatic and economic influence has increased the significance of the bilateral relationship, ठीक है, it's the growth in diplomatic or economic influence which increase the relationship of which increase their bilateral relationship, okay. Now let's see that which are the areas of dispute between India and China. See, there was a war in 1962 in which the China annexed a Skychin. एक minute, yeah, see, here, this is the Skychin which was actually the part of Jammu and Kashmir, here it's ठीक है, but China told that कि हमारे जो दैट पाथ्स होते हैं ना, और जो ट्रेडिंग के लिए जो रूट्स होती है दैट वी यूज़ फॉर ट्रेड, ओके, वो क्या है, इस रूट से होके जाया करती थी इन द हिस्ट्री, ओके. सो इन 1962 दे अटैक्ड ऑन द सोल्जर्स, ओके, और दे कैप्चर दिस अस्काइचिन एरिया, ठीक है, दे कैप्चर दिस अस्काइचिन एरिया एंड इट्स एंड आफ्टर दैट डिक्लेयर अ सीज फायर. उन्होंने क्या किया, सीज फायर को डिक्लेयर किया एंड दे एनेक्स इट, ओके, उन्होंने एनेक्स कर लिया, इसको कब्जा कर लिया इस पर, ठीक है. सो दिस एरिया इज ऑल्सो रिमेन्स इन डिस्प्यूट, ओके. ये एरिया अस्काइचिन का, यहाँ पर बहुत सारे सेवरल पॉइंट्स आई विल शो इन मैप बाय लेटर ऑन, ओके, आई विल शो यू. एंड हेयर द एक अरुणाचल प्रदेश में द एरिया विच इज़ तवांग.
तवांग एक एरिया इज ऑलवेज इन न्यूज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है. एंड चाइना इट आल्सो क्लेम्स द, ठीक है, चाइना इसको क्लेम करता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है फ्रॉम द साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ओके, सो दिस बोथ एरियाज अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख इज़ इन न्यूज़ जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना एनेक्सेशन. ओके, चाइना के एनेक्सेशन या फिर चाइना के इन्वेजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा इट इज़ इन न्यूज़. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर. ठीक है, ओके, सी यू विल गेट मोर, you will understand very well easily here. Okay, here is Karakoram Pass. ठीक है, Karakoram Pass here. Okay, Depsangs lie here. Askai Chin तो ये पूरा एरिया अस्काई चिन है. ठीक है, here is Gogra, Galwan Valley, Pangongso Lake. Okay, here are all the 14, मतलब कि 14, 13th, 14, 15, 16. 13, 14 and 15 and 16. Here are the patrolling points is here. Okay, and you will amazing to see that यहाँ पर क्या हुआ था actually. This जो पैंगोंगसो लाइक में क्या हुआ था, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, you have heard there that disengagement has been seen between India and China, and Chinese troops pull their soldiers back, and Indian troops also, Indian government told them to ordered them to पुश बैक दियर सोल्जर्स. ओके, उसके बाद दोनों के बीच में दूर क्या हो गया, डिसएंगेजमेंट हुआ और द सोल्जर्स हैव बीन गॉन फ्रॉम देयर. ठीक है, तो आफ्टर दैट 13th राउंड ऑफ टॉक्स इज गोइंग ऑर्गेनाइज. ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा था टू रिलेटेड टू द टॉपिक हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा. हॉट स्प्रिंग यहाँ होगा और गोगरा इसके आसपास है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, इट्स अ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 16, हॉट स्प्रिंग और गोगरा. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैप. सो इफ़ यू विल हैव can you if you want to take a screenshot of it, you may take it. Okay, now here it is also very good because here it is clear all about the things. Okay, see, as I have told na that why is the dispute is going, why this dispute is going on. ठीक है, because there is no demarcation line between India and China. Okay, dispute इसलिए चलता है ना इंडिया और चाइना के बीच में क्योंकि कोई demarcation की line नहीं है. There is no demarcation line between India and China. तो अब now you will ask that what is McMahon line. Yeah, suppose McMahon line is a line which is between China and only Arunachal Pradesh, not whole part of India. Okay, is only the part of Arunachal Pradesh. McMahon line is there only. Okay, and there is no demarcation line, there is no international borders between India and China, there is no international borders between India and China. ठीक है, so it's very important to have a look on this map and that see this red dotted area here, red dotted area ये बताते हैं कि it's a McMahon line. ठीक है, बट चाइना इसको नहीं मानता है. चाइना did not agree with this. चाइना सिर्फ इसको मानता है. एंड आफ्टर दैट इन जो 1962 में क्या हुआ था ना कि व्हेन द चाइना आर्मी, चाइना ट्रूप्स ने जब व्हेन ही इन्वेज फ्रॉम द बोथ द साइडेड. ठीक है, तो दे वर सक्सेस इन इन्वेजिंग द एरियाज ऑफ अस्काई चिन एंड तवांग. ओके, बट आफ्टर दैट दे हैव pulled back the army from Tawang areas because this McMahon line was there. Okay, and they told that we will not cross this McMahon line because it's an international border of the country. And but they captured this area which is called as actual line of control here, LAC. ठीक है, they captured this LAC and they told that this part of area is in our territory. ठीक है, they claimed that this part of area is in our territory. ओके, और यहीं पर आप देखेंगे कि पिछले साल 2020 में क्या हुआ था, डिस्प्यूट देखने को मिला था इन गलवान वैली में डिस्प्यूट देखने को मिला था. ठीक है, वो एरियाज क्लेम करते हैं. ठीक है, और बोलते हैं कि वो हमारी टेरिटरी में, इट्स कम्स अंडर आर टेरिटरी. ठीक है, सो मेन बोन ऑफ इंटेंशन क्या है, मेन बोन ऑफ कंटेंशन है द टू साइड्स. मतलब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ही होता है सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट. ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा इशू जो कि कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट का, वहाँ पर कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट वहाँ हो रही है, दैट इज वी कॉल बोन ऑफ कंटेंशन. तो इंडिया और चाइना इज एग्जैक्टली द सेम, दे आर हैविंग अ बोन ऑफ कंटेंशन टाइप रिलेशनशिप बिटवीन देम.
ठीक है. It's only one topic is that is it's a big topic, that is boundary dispute between India and China, and it is why is it happening, because there is no demarcation line. See, it's a clear cut example that there is no demarcation line between India and China. That's why it's a matter of concern. So okay, now I want to tell you that okay, they have India and China is also are the both India and China are both ancient civilization and major developing countries. Okay, India and China are both ancient civilization and major developing countries. Okay, the development of ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चाइना इज इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अदर. इंडिया और चाइना के लिए जो डेवलपमेंट्स है, इट्स वेरी मच अपॉर्चुनिटी. क्या है अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए बहुत अच्छी. ठीक है. और द बॉर्डर डिस्प्यूट और बॉर्डर कन्फ्लिक्ट विच लेड टू सीरियस सेटबैक. जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे ना 1962 में, मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था वहाँ पर जो ईस्टर्न लद्दाख के एरियाज़ में उन्होंने दे हैव कैप्चर्ड द एरियाज ऑफ स्काई चेन एंड दे अनेक्स इट. ठीक है. और दे क्लेम दैट दिस एरिया, दिस स्काई चेन इज इन आवर टेरिटरी. ओके. सो इन 1962 व्हेन दे इन्वेज ऑन इंडिया, it led to a serious setback. It led to serious setback in bilateral relations between India and China. ठीक है. जब 1962 when the war was happened in 1962, when war was happened in 1962, then this is led to a serious setback in the bilateral relations between India and China. And since the beginning of 21st century, the trade between India and China has grown from less than 3 billion to, मतलब कि ठीक है, all of the things are in one side and the things which is related to trades, economy, development is other side. Okay. One of the main thing is that the dispute is still going on between India and China is mainly on border dispute. ठीक है. But on the other side, the India and China is working together as for the economic sector, development sector. Okay. So this is development sector is something else. Okay. Because as you have seen that 21st century के बाद जो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ ग्रोन फ्रॉम 3 बिलियन की पहले उनकी ट्रेड थी. ठीक है. आफ्टर दैट इट्स ग्रोज अप टू 100 बिलियन. इट मीन्स it increase of about 32 times from there. Okay. More than 1,000 of Chinese companies, means you can't believe that thousands of Chinese companies have increased their investment in industrial parks in India. ठीक है. Chinese companies they have initiated in India to open this industrial park. Okay. So it's very important to note down this. It's very much important from the exam point of view. Okay. और ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट कहाँ आपको देखने को मिल जाएगी. ठीक है. उससे पहले हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या और एक्चुअली क्या क्या है बिटवीन द रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. ओके. The culturals and economic relations between India and China date back to the ancient time. The Silk Road not only served as a major trade route between India and China, but also credited to facilitating the spread of Buddhism from India to East Asia. ठीक है. जो सिल्क रोड है ना इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है. उसको बोला जाता है इट्स अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इज ओनली नॉट क्रेडिटेड. It's not only for the major trade routes, it's also facilitate the spread of Buddhism. ठीक है. it also spread Buddhism from India to East Asia. And during the 19th century, India was involved in growing opium trade with during the 19th century, China was involved in growing opium trade with the East India Company, which export opium grown in India. ठीक है. After the 19th century या फिर during the 19th century, China was a country who grows his opium trades with East India Company and exported this opium to India.
During the World War II, both British India and Republic of China played a crucial role in halting the progress of imperials of Japan. ठीक है, both the British India and the Republic of China have played a very much crucial role in halting the progress of imperial Japan. ठीक है, the relations between the contemporary China or India have characterized by the border disputes. ठीक है, the since the country after independence of India, ठीक है, both the sided have faced three major war, that is China India Sino India wars 1962, जो मैंने आपको बताया. In this war क्या हुआ था कि annexation of Askai-Chin का annexation. Sino-Indian wars in 1967 was all about the Tawang. ठीक है, तवांग पे. एंड 1987 और 1987 सिरकिस में लेकर, सिरकिस को लेकर, द टॉपिक सिरकिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सिरकिस को लेकर क्या हुआ था, दिस war was happened, this war was in news, this war was happened. Okay, so in early 2070 the two countries clashed in डोकलाम प्लेटू. ठीक है, बहुत सारी ऐसी आपको देखने को मिलेगी. जैसे आप देखिए डोकलाम का एक आपको यहाँ पर इशू मिल गया. ठीक है, आपको मैंने बताया अस्काई चिन पे, अभी गलवान वैली पे देखने को मिला था. ठीक है, तवांग हो गया, नाथुला हो गया, नाथुला अरुणाचल प्रदेश एरियाज़ में. ठीक है, वो वहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं गलवान में पिछले 15 जून 2020 को अटैक हुआ था. इट वाज द अटैक ऑफ 15 जून 2020 इन गलवान, एट गलवान वैली, वेयर द आर्मीज फ्रॉम द बोथ द साइड fortified पोजिशन एंड इट बिकम फ्लैश पॉइंट. द आर्मीज क्लैश थ्रू द फाइट एंड क्लोजर कॉम्बैट बिटवीन द सोल्जर्स. ठीक है, in that fight, in the fight of Galwan Valley, approximately 20 soldiers died. Okay, 20 soldiers were died. Okay, and it's a very much, okay, बहुत ही एक बड़ा हादसा था. it's a very much it's a very huge incident. ठीक है, since then and after that the relations between India and China again it's came in setback relations. Okay, for the bilateral relations. सो इट इज़ सो आप जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे डिस्प्यूट हुआ. जैसे आपको मैंने बताया गलवान डिस्प्यूट हुआ. इट्स ठीक है, सो इस तरह का चीज़ें. ठीक है, एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट द डिस्प्यूट एज यू लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट बाय सीइंग द डिस्प्यूट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइना और इंडिया. ठीक है, चाइना और इंडिया ऑन मेनी रीजन्स, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स में वी आर सीइंग दैट डिस्प्यूट हैड हैपेंड. ओके, सो द रीजनल डिस्प्यूट शुड बी, रीजनल डिस्प्यूट क्या होना चाहिए, शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू रिजॉल्व होने चाहिए. एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग relations are very much important not only for mutual benefits of people but also for the people of but also for the region and the world. ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह का रिलेशन देख रहे हैं कि इस तरह का डिस्प्यूटेड हिस्ट्री है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, बहुत सारे रीजन में. सो ये जो डिस्प्यूट है ना, वॉर्स को हम छोड़ के मतलब कि वी कैन लीव वॉर ऑन अदर साइड. ओके, वी कैन सॉल्व दिस, वी कैन रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग्स एंड कंसल्टेशंस and after that solving such type of dispute, India and China relations can be strong, or it's not only important for only the mutual benefits of the people between India and people of India and China, but also region for the of the world. Okay, अगर ये they work together, if they work together, okay, they will able to cope up with many of the things. Okay, so thank you for watching my video. Thanks and have a nice day. Tata, bye bye.